हैप्पी बर्थडे तो बॉक्स ऑफिस का होगा जब पिक्चर रिलीज होगी. एंड नाउ इज द वेरी टैलेंटेड, गिव इट अप फॉर तारा सुल्तान. वेलकम तारा. सर सेंटर में जॉन सेंटर में. लेडीज एंड जेंटलमैन, खूबसूरती की जब बात आती है, क्या बात है, ये जहां खड़ी हो जाती है, गॉर्जियसनेस वहां से शुरू हो जाती है. गिव इट अप फॉर दिशा पाटने. ये लोग खेल लो. लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनकी विजन जिसको अभी बड़े पर्दे पे देखा, एंड एज ही सेड कि भाई जो भी फिल्में बनाते हैं, ऑफ कोर्स हम बोल रहे हैं यहाँ पे, वो लोगों के दिलों में घर कर जाती हैं. The one, the only, जिनका सीजन चल रहा है. Give it up for Mohit Suri, ladies and gentlemen. तालियां बनती हैं यार. He's got this amazing ensemble together. लेके आए हैं, of course, डायरेक्टर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, लेकिन जिन्होंने इस पूरी फिल्म को बैक किया, उसको आप तक पहुंचाने के लिए जी जान लगा रहे यार. They've put in their money, their sweat, their blood. Give it up for Ekta Kapoor and Bhushan Kumar, ladies and gentlemen. Two of the biggest production studios of our country. तालियां बजती रहनी चाहिए. वेलकम सर. फोटो है, फोटो इधर, फोटो चेयर है यार. चेयर बाद में करेंगे. प्लीज थोड़ा नीचे ये दिखना. हाँ, कैन वी हैव द माइक्स? थैंक यू मैम. जी हाँ, यही है ब्रेकिंग न्यूज स्टेज के ऊपर. पहले आप माइक बाद में. दिशा जी, हेलो दिशा. हेलो भाई, रिफ्लेक्टर आ रहा है. हाँ, नाइस मास्क. तारा जॉन इज क्लोजेस्ट टू द एग्जिट. ऑलराइट, सो मेरे पास कुछ सवाल जवाब है, वो कर लेते हैं पहले. तो जॉन भाई, दिस वंस फॉर यू. प्लीज टेल अस, एवरी टाइम वी हैव सीन यू ऑन द बिग स्क्रीन, ऐसा, और स्पेशली मैन इन यूनिफॉर्म में या हीरो बनते हुए, तो आपसे अच्छा वो कोई कर नहीं सकता. बट यहाँ जब विलन बनने की बात है, धूम के बाद, आई थिंक ये उसके बाद अभी आप विलन प्ले कर रहे हो. I think it's homecoming for me. When I first started films like just it is all about having a negative shade. For me, Mohit and my first film was together. So, working with Mohit again is really special. He's a fantastic filmmaker. Playing a villain like एकदम ऐसा, rich dad, spoiled son. ऐसा है क्या? आई वुड से मेरे बाप दिल से बहुत अमीर है. और मैं जितना बिगड़ना चाहूँ, मेरी परवरिश मुझे बिगड़ने नहीं देगी. लेकिन इट्स ऑलवेज फन टू प्ले व्हाट यू आर नॉट, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव मैं इतना बिगड़ा हुआ नहीं जितना मोहित ने मुझे कास्ट किया. बट खैर, सम कैरेक्टर्स सूट यू, सम विजुअल्स connect. When I heard this film, when I heard this idea, and I worked with Mohit before, I had fulfilled कि हीरो तो प्ले कर चुका हूँ, और इतनी बड़ी फ्रेंचाइज में तो घुसने का मौका मिलेगा तो कुछ ऐसा ही करना चाहिए which stands out, and play a spoiled brat or a rich spoiled brat as you called it. शायद मेरी शक्ल पे there is enough रईसियत, enough हरामीपन, I don't know, but I really enjoyed doing it, and for me I embrace different roles, so for me it was a challenge. And अगर आपको ये लग रहा है यानी कि the characters work, अगर 2 मिनट में आपको इतना कुछ दिखाई दे रहा है, सर लगा, बिल्कुल लगा, इसलिए पूछ लिया यहाँ पे. Thank you so much. Tara, this one's for you. Please tell us, you're playing a singer in the movie, right? Oh no, I'm actually playing a rock star in this. Sorry. Yeah. You'll obviously see more in the film, but it was amazing to do this with Mohit and the music team. There's so much that we have that lies ahead of you guys. So yes, a rock star and a singer, but more a rock star. Okay. Give it up for this rock star, ladies and
Tell them, can you make some noise? Disha, this one's for you. आप विलन नहीं हो सकते. किसने बोला? ऐसे विलेन सबको मिले. ये विलन नहीं हो सकते. आप तो you're not playing the villain, right? No, I'm just playing a middle class girl with a top class attitude. जवाब देख रहे हो? किल कर रहे हैं सब. Please tell us something about this character of yours, yeah? Well, she understands her charm and she uses it over men to Right. get what she wants. Right. And she's not a good girl that a guy wants to take home. She's a bad girl that every guy wants to have. Yes. Mohit I can explain better, of course. She's killed it. Mohit sir, would you like to throw some light on the element of whatever controversy तो नहीं कहूँगा sir, please. देखो कितनी ऑथेंटिक कास्टिंग की है ना मैंने फिल्म में. सच में. नहीं, I guess इतना बुरा तो हम सब में होता ही है. Right. And I feel कि ये एकता का आइडिया था कि तूने अपने हीरोज के साथ दिल तोड़ा है, they've cried, they've this thing. अभी तुम्हारे विलेन्स के साथ थोड़ा वो दे दो. Right. Bring out this emotion. एक विलेन भी रोता है, उसका भी दिल भी टूटता है. And I couldn't get a better producer and a cast to make this film. Right. Because you know it was more than just doing a part, it was also more about enjoying this film, Right. enjoying the bad person inside you. Yeah. And thank you. But आपको ये पता था ये इतनी बड़ी होने वाली है because you know टॉप के 2 प्रोडक्शन स्टूडियोज एकता जी here, भूषण सर here, तो पता था ये इसमें तो यही लोग चाहिए. इनसे बड़ा तो नहीं हो सकता था ना सर आप ही के लिए. Well, I think that credit has to go to my producers. Right. Ekta said write the film, and so me and my writer team Right. wrote it. Huh. Kanika also helped, and when I came to her with the script, she said, "Now you see where I take it," Right. and that's where we are today. So thank you, Ekta, for that. Wow. I'll definitely come to her. लेकिन उससे पहले भूषण सर दिस वंस फॉर यू. मुझे बताएं अक्सर एक्टर्स से पूछा जाता है कि फिल्म की शुरुआत कैसे हुई, ये रोल आपको कैसे मिला, किसने कहानी सुनाई. यहाँ पे जब भारत के सबसे बड़े प्रोडक्शन स्टूडियोज साथ आते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई? हाउ डिड दिस हैपन? मेरा बहुत पुराना रिलेशन है अमीर एकता के साथ. एंड एक विलन का म्यूजिक भी वी ओनली डिड एट टी सीरीज. एंड दिस टाइम वी वांटेड टू टेक आवर इक्वेशन फर्दर बाय डूइंग अ फिल्म टुगेदर. राइट. सो उस तरीके से शुरुआत हुई. एक रिश्ता इतना पुराना है तो उसको हमने फिल्म प्रोड्यूसिंग में बदलना चाहा. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू एसोसिएट विद एकता एंड बालाजी and great working with Mohit. Obviously we are doing After Ashiki this film, and I hope everybody loves this film. It's a great film. I've seen the film, so I hope audience also likes it. सर विलेन कौन है बता दो ना. विलेन तो थिएटर में मालूम चलेगा. ऑलराइट, वैलेंटाइंस डे पे जाएंगे. सर मैं कुछ ज्यादा पूछ ही नहीं रहा हूँ. एकता जी दिस वंस फॉर यू. प्लीज टेल अस, पुराने जमाने में जब फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर फिल्में बनती थी प्रोड्यूसर को विलेन दिखाया जाता था, ठीक है. इस समय अगर मैं आपसे पूछूं इस फिल्म में लाइक बीटीएस में कौन है विलेन, डायरेक्टर, एक्टर्स या प्रोड्यूसर्स? Please sit next to her and ask this question actually. Honestly, मोहित कहेगा मैं ही हूँ. नहीं सर मैं कहलवाना नहीं चाह रहा था. क्यों रिश्तों में दरार लानी है यहाँ पे? राइट. रिश्तों में दरार लाना मेरा पुराना काम है. चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म. इसके लिए आए थे वो तो मिल गया, बहुत मिल गया, ओवरडोज हो गया. इससे ज्यादा देंगे तो फिर रहेगा नहीं. चलो. ऑलराइट. वो लॉकडाउन था, टाइम ऐसा था कि मोहित के साथ मुझे विलेन बनानी थी. बट यू नो वी वर लाइक, हमारे पास कोई अमेजिंग स्क्रिप्ट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है. मोहित के पास एक आइडिया था और रोहित शेट्टी हु इज माय राखी ब्रदर, ये आइडिया मोहित ने उन्हें दे दिया था. आई वेंट एंड मेट रोहित एंड एक दिन में उसने हाँ कह दी कि यू कैन टेक इट बैक. एंड ही सेड ये सबसे दमदार स्क्रिप्ट है, तुम मैंने मोहित को फोर्स करके लिया था और अब तुम फोर्स करके मुझसे ले रही हूँ. ऐसे बहन का तो हक बनता है. सो मैंने ले ली और ऑनेस्टली मोहित a tendency of being the most, he surprises you, sometimes he can really like shock you with not coming for an edit also, and sometimes he's such a mad man कि वो edit छोड़ता ही नहीं और he makes some, he's a crazy genius. I've worked with lots of people and many directors, but if I have to give the mantle of genius, only 2 men in this industry will get it, Anurag Basu and Mohit Soni. And both drive me mad.
But and you know, I have to. I mean, we don't give enough credit to writers. Asim, stand up. Stand up, Asim. Whatever happens to this film, I am honored to work with a technician like you. You, Kanika, and Mohit Suri, I am telling you this at the launch of the film, are the reason And he's like, मैं villain हूँ यार, तू कहाँ आज hero बना रहा है? You villain, hey villain, mic on करना. अरुण सर, आइए. हाँ. अर्जुन, जब भी आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो क्या आपको आपके आसपास किसी से डर भी लगता है विलन भी आ जाएंगे? जब एक कहानी होती है तो कोई हीरो होता है, कोई विलन होता है. आपको अपनी कहानी में कभी हीरो बनना पड़ता है और कभी कभी किसी के लिए विलन भी बनना पड़ता है. तो प्यार अगर सच्चा हो तो आप ये नहीं सोचते कि हीरो हो गया विलन हो गया. आप प्यार सच्चाई से करते हो. उसके रेपरकशंस आपके लिए कुछ और होंगे, मेरे लिए कुछ और होंगे, इनके लिए कुछ और होंगे, इनके लिए कुछ और होंगे. तो इन लाइफ वेयर लव इज कंसर्न इट हैज टू बी प्योर. आप एक तरफ से देखोगे तो कोई विलन, दूसरी तरफ से देखोगे तो वो हीरो. कैसा रहा पेरिस का एक्सपीरियंस? आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं मुझे? हाँ तो चेक कर लीजिए. Hi John sir, hi John sir, hi Arjun. Hi. Firstly, congratulations. The trailer looks very interesting. Thank you. My question is, I have two questions. First one is for John sir and Arjun. Arjun, it is a homecoming for you as well. You started with great characters in Ishaqzadeh and Aurangzeb, and John sir, like you said, the same. What was it that attracted you to this character or this film? Both of you. I love the script. When I heard the script the first time, I loved it. Then I met Ekta and Mohit in the office, and I was totally floored by the script. It's unbelievable, and I think Mohit is he's executed it even better. So it's absolutely fantastic. Yeah, I think most importantly, I was dying to do an ensemble. I was dying to do a film that brings people together on the big screen to celebrate what I've grown up watching. And what you're talking about, the grey character part, yes, I've been very, very fortunate. Pehli film se hi, there has been enough shades in the kind of roles I've done, whether it's Aurangzeb or, like you said, Ishaqzadeh, my starting point also. I think both those factors, I never have been scared of playing grey. So it's exciting for me to come back to where I started. I've done Our Girlfriend with him, I've done Key and I've done Two States. I've done all sorts of films, but I always wanted to go to the dark side and to do it in this kind of a setup. At the end of the day, you need to trust people when you work with them. Script तो बहुत अच्छी थी, लेकिन साथ में I think for somebody like me who was coming back into doing something so, I would say, fun and dark, you need to know that your director knows the space better than even you do. Like I remember watching Murder 2, which I absolutely loved. मैंने यही पे PVR में ही देखी थी. And when you see the villain in that film, it is as exciting as Imran Hashmi's role. Prashant Narayanan played the villain. So when you have a director that can bring out that darkness and still make you have a story, हर villain की एक origin होती है, हर villain का एक reason होता है वो villain क्यों बनता है. वो मुझे बहुत exciting लगा. So I think the faith and trust that I had in Mohit and the team with the producers and having such an ensemble, for me it was a no-brainer actually. And there's a guy here. I had gone to him with villain 1 also. So this time when I went, he said, "ये वाला जाने दे दो." I called up Arjun, please do it. We went and he said, "अच्छा तू second part के साथ ये वाला जाने दे दो." That is a fact. उस समय मेरे तेवर कुछ और थे. मैं ऑलरेडी तेवर कर रहा था. मेरा मजाक आप प्लीज हेडलाइन गलत मत बनाना. मैं अपने फादर की पिक्चर कर रहा था तो मैं नहीं कर पाया था उस समय. And that's the true reason. But this time when he did come to me, I said, yeah, it's destiny, and I think it's meant to be that I'm a part of this film. So I decided not to let it go. Yeah. And Disha, after Malang, then Ek Villain and Yodha, is it a conscious decision on your part to do action thrillers? I mean, I love action thriller as a genre. I have grown up on this, and I got really, really lucky to work with Mohit sir, with Malang, and I think he gave me that inspiration to go ahead and go all out. And yeah, I mean, I love this genre. I would love to do even more.
it's my second film with him, and I hope Mohit sir is not bored of me yet because I love to work with him again and again. You know, like normally people call up your guy friends and ask them that which action film masala I want to watch in the night, English, Japanese, anything. I call up Disha and I say, which is a good commercial Japanese or the film to watch? She'll give you Korean films. She's the girl who thinks like full on their hand. Hi everyone, over here, this side. Here. Shobhajit from IWM Buzz. I have my question for Arjun and John sir. John sir over here, right? Yeah, hi. Yeah, so the movie talks a lot about one-sided love. And often what happens, be it teenagers or anyone maybe above their 20s, one-sided love, when people fail in love, a lot of wrong things tend to happen. They tend to divert their energy towards all sorts of wrong reasons. So what I want to know from your end, being public figures, is that what would you say to those people who are probably heartbroken? How do they channelize their negative energy into something productive and constructive? What the theme of my film, correct? But that is what it is. I mean, principally, आपके सवाल में ही एक जवाब है, because you have to find something constructive. At the end of the day, I think जितने भी लोग यहाँ बैठे, सबका दिल कभी ना कभी टूटा है. Somebody fallen in love, somebody. हाँ कि ना? अच्छा किसी ने कौन महापुरुष? आप स्कूल ले लीजिए, कॉलेज ले लीजिए. देखिए, प्यार मैं नहीं मानता कि प्यार आपको बचपन में भी होता है. You grow up, you work, you meet people, you travel. Love is something that will break you at times, but it is also what makes you, and you have to find the positive in that. And the theme of this film has all those shades in it. So I think advice देना is very very silly because हमको नहीं पता उनपे क्या बीत रहा है. Genuinely, in all genuineness, मुझे नहीं पता how to give advice where love is concerned, because beyond the point, how do you know what is happening in somebody's love story? But at the end of the day, I would say to be able to fall in love is amazing. To be able to rise after you fall in love and have your heart breaking is even more amazing, because you can actually understand the value of what life is. I feel दिल टूटना बहुत जरूरी होता है. उसके बिना आपको जिंदगी में वो रस नहीं मिलता. This film has a lot of that. There is a lot of heartbreak, and that happens to all of us. I feel there is some strange mad joy also in going through a heartbreak and rising above and beyond it and becoming your own person after it. And I'm sure that a lot of people who have had terrible heartbreaks and breakups and heartaches, और उसके बाद कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को संभाला या सुधारा. So I think full credit to those people, and that is what a true lover is. You don't always get what you want, but you have to live your life and continue loving and wishing well for that person as well. Thank you, sir, for answering. John, sir, your views on this? Same. So I don't know why I'm in this press conference, because Arjun is so fantastic with all these answers. And then when I see Disha and Tara here, that's the first thing I said. I said, हमारी क्या जरूरत है यार? This is lovely. John, sir, आपके सामने Amit here from the headmaster. अर्जुन आपके पास भी आ रहा हूँ. थैंक यू. तो ये दोनों जो लुक है आप दोनों का, मतलब दाढ़ी में और स्टड लुक, वो आयप्पम कुशन के लिए है या मतलब आपके तेहरान और वो लेडी किलर? अच्छा, आप आगे की बात करना चाहते हो तो आप जब इंटरव्यू करेंगे आप अभी फिलहाल संकेत मिल सके. ये लुक मतलब किस चीज? टॉप मोर यार. आई थिंक जो आप अभी पूछ रहे हैं फिल्म की लुक की बात कर रहे हैं. ये अभी की लुक, ये मैं अभी तैयार होके आ गया हूँ. ये फिल्म की लुक ही है. इट्स वेरी सिमिलर टू आर्म रेस्ट एंड बिहेविंग इन द फिल्म. सो इट्स द सेम वाइब. जॉन सर की लुक जॉन बताएंगे तो बेटर होगा. I'm shooting Tehran next. So और दोनों कब शुरू करेंगे? वो अनाउंसमेंट कर सकें आप? You want to become my manager? अच्छा, दिशा एंड तारा आप दोनों के लिए तो आप दोनों ने मतलब इस फिल्म में कितना अभी दिखा तो दिशा और तारा, ओके, आप दोनों ने अपने अपने कैरेक्टर के ब्रेक के लिए क्या क्या किया है इस फिल्म? पहले I just followed my director's advice, and also I remember watching a lot of these negative movies at night, and there was a point I was like, sir, I can't watch it anymore because it's just like making me into a different human. But yeah, I just followed what he told me. I think Mohit sir really knows what he wants, and then he just makes everybody's life easier.
For me, actually, my character is not from Bombay, sir. And what was really interesting and fun was that Arjun and I didn't really know each other very well, or we've not acted together before. So we met for the first time on set in Goa. We were shooting a segment of the film in Goa. So we actually didn't rehearse, didn't do any prep or readings, but I feel like that actually really helped our performance and helped the Because they film. hate each other in the first. We have to hate each other in the first half, and then obviously it takes its own course. That came naturally to. Yes, it was fab. And for music, actually, there was some music prep for me, but I can't talk too much about that. So, बाद में पता चलेगा. No, you must talk. Yeah, so Tara is singing really for the film also. So she actually is someone who is a trained singer and stuff like that. And I was like, wow, this is a double whammy. You've got the actor. Hi, this is Sohail here on your right, the second, yeah. I'm Sohail from Ancient Bollywood. Congratulations to the entire team. The film looks superb. I mean, the trailer is superb. It's very stylized, cult, chilling, thrilling, whatever you can say, like, you know. I just needed to ask each and everyone, अपनी life में कभी ऐसा कोई act किया हो जो villainish type हो? Maybe it could be in a prank or very, you know, in a small way also. और ऐसा कोई काम love में, मतलब प्यार में, जैसे could be anything, हाथ काटा, blood से letter लिखा है, anything, उस तरह का कुछ काम किए हम लोग. John, आपसे start करें. Do you hear me? John, क्या आपने कोई ऐसा काम आप लोगों ने किया है विलनिश टाइप का रियल लाइफ में? कुड बी ना वेरी स्मॉल वे आल्सो, कुड बी अ प्रैंक, और या फिर लव में आपने कुछ ऐसा कुछ काम किया हो जो कुड बी, यू नो, कुड बी कुछ भी थोड़ा अतरंगी टाइप का, यू नो, टू शो योर लव. He's asked you, but everyone. I can't become your manager now, no? It's a bit late. I need permission for that also first. But he wants to know what you did for. Have you done anything that was dark for love? Any villainy? No, I'll think about it. I'll come to it. Well, why me? Bhushan sir. Arjun, you're saying on my way. I know one thing about John. I can say something about John. John has the most subtle and cold way to be sarcastic. It's a great, like the day I'm looking overweight, I put on 10 kilos. Very thin, Baba, Baba. you're looking so good, Baba. Baba, you're looking so good, Baba. Baba today. You're looking very good. This- I've not seen better style in that. आप सबको पता है, अच्छा सॉरी डिविएटिंग, आप सब जो इधर बाबा 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 बोलते हैं ना, रणवीर और मुझे, वो बाबा बाबा कहाँ से चालू हुआ? यहाँ से. अरे बाबा you're looking so good, बाबा 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 बाबा, ये है ओरिजिनल जिसकी वजह से चालू हुआ बाबा 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 बाबा. या जवाब दोगे आप सब लोग? यार विलनी मुझे नहीं पता यार. I can't remember often. Genuinely थोड़ा ज़्यादा याद नहीं Maybe सवाल if you're पूछा है. a child in a school time, कभी या स्कूल टाइम में अगर अपने नस काट रहा था तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. नहीं उस वक्त नहीं. नहीं यार, मेरे लाइफ में कुछ विलेन आए मतलब my best friend and me, I went to my best friend one day and said, I like this girl, can you find out what she thinks about me? वो मेरी लाइफ का विलन बन गया. He didn't go and ask about me, asked about himself and he started dating her after. तो यार ऐसी चीजें हुई है लाइफ में. मैं एक्चुअली विलन ज्यादा स्क्रीन पर प्ले करता हूँ, ऑफ स्क्रीन में. एक तो आपने भी कहा कि यू आर अ विलेनिश काइंड ऑफ पर्सन, लेकिन आपने कभी कुछ किया हो? You know, the tagline of this film is heroes don't exist. You know that. I don't think anybody on this stage can say that they've not done anything in love. Everyone has. I don't think I've done something villainy, but I have on air proposed to someone. I told someone to watch an episode on air and I proposed in that episode. मोहित, जैसे एक कॉप यूनिवर्स की फिल्में बन रही है, तो ऐसे हो सकता है कि आगे जाकर एक विलेनिश टाइप की या एक विलन रिटर्न और फिर आगे एक विलन का यूनिवर्स. क्या लगता है कि विलन का यूनिवर्स बनेगा या नहीं? पहले ये चल जाए. 8 साल लगा ये स्क्रिप्ट लिखने में. I think 8 साल बाद ये स्क्रिप्ट आई. And I think what's important is yes, we definitely would think about that. That's why there are connections to the previous part. But it's important that this film does well. And more than, I went with one script to Ekta before, and I'm thankful to her that she completely rejected. She completely rejected, said this is not villain. फिर ईगो पे आ गया. फिर डे नाइट बैठ के फिर 2 दिन में वापस ये स्क्रिप्ट लेके आया. अंदर का विलन या जागा. And I think that's most important. And to not make it a proposal,
or a project, or just because everyone else is doing it. But when we genuinely sit here, after COVID, after everything, and promote it day and night, that's how film should be made. भूषण सर आपके क्वेश्चन भूषण सर आपके सामने अगेन भूषण सर तो ये मतलब फिल्म जिस बजट की थी और आप और एकता दोनों अपने अपने इंडिविजुअली मतलब कैपेबल हैं कि इस फिल्म को इंडिविजुअल भी प्रोड्यूस कर सकते थे, तो फिर दोनों ने मिलकर क्यों प्रोड्यूस किया? एक और 11 इसीलिए। और पिछले 2 सालों में कोविड का जब मतलब ये चला है पूरा टर्म, तो ऑडियंस की टेस्ट बदली है, ठीक है, ऑडियंस कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी हिंदी की फिल्मों से। तो आप लोगों ने भी, आपने एकता जी ने, मोहित जी ने ये मतलब सोचा कि इस फिल्म के स्क्रिप्ट में कुछ और चेंजेस किए जाएं कोविड के टेस्ट के हिसाब से, या फिर वही स्क्रिप्ट रखी है आपने? It was written before, but there was a complete, you're right, we rewrote it completely, and that's when Kanika also came on board, and we rewrote the whole thing during COVID. It was, it was clear both entire Bhushan ji ko duniya same nahi rahegi. There is a theatre experience and there's a home experience, and we want to go out and make a theatre experience with this. Johnson here. Johnson here. मोहित सर, Really good to see you. और जिस तरह से आप आज बैठे हैं एकदम मासूम बच्चा लग रहे हैं. With all due respect. एक कोना दे दिया है आपको, बैठे चुपचाप, जब कहा जाए तब बोलो. He is in character. जब फटेंगे ना देखना फिर क्या होता है. जॉन सर, जब मैं एक विलन की बात करता हूँ, काफी कामयाब फिल्म रही है, रितेश देशमुख के किरदार को आज तक याद करा जाता है. जितना हमने ट्रेलर में देखा उससे एहसास तो ये होता है कि आप ही विलन हैं. तो देयर बी अ कंपैरिजन, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? We just hope that the franchise does well. और मेरे हिसाब से I think this film is fantastic. So I don't think there'll be a comparison. I think there'll be a celebration after this film. So I really hope for Bhushan, because I'm working with him in so many films. Ekta is we're from the same school also, and also she's lovely, and worked with her in a film before, Shootout at Wadala. तो मैं यही होप करूँगा कि this film does well for all of us, and for Mohit, who I'm totally in love with her before and after this film. He's made such a beautiful film. Expectation already high है, ट्रेलर बहुत अमेजिंग है. बोल लो यार. जॉन सर, ट्रेलर बहुत अच्छा है और एक्सपेक्टेशन पहले से ज्यादा हाई हो जाएंगे क्योंकि ट्रेलर बहुत अच्छा कटा है, क्योंकि ट्रेलर इज ऑलवेज द फेस ऑफ द फिल्म. जब इस तरह की एक फिल्म की फ्रेंचाइजी आती है, उसका सेकंड पार्ट बनता है, जब आप हिस्सा बनते हैं या कोई भी शख्स उसका हिस्सा बनता है, स्पेशली मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है? आर यू नर्वस और एक्साइटेड? No, I think finally it's the audience, right? You have to respect the audience and they have to see the film. So you can promote it as much as you want to, you can do whatever, but finally it's the film that's going to talk. So excitement जरूर है क्योंकि we've all loved what we've seen. So there's a lot of excitement, but it's up to the audience. Bhulbulaiya to equivalent. What are the pressures on you as a producer, and what is the idea of sequels for you? See, pressures तो रहते ही हैं, लेकिन benefits ज़्यादा रहते हैं because it's a very famous franchise होती है, जो hit franchise होती है, उसका benefit ज़्यादा मिलता है. Like we got in Bhulbulaiya after, I guess, we made after 14 years. ये 8 साल बाद बन रही है, तो वो बेनिफिट्स ज़्यादा रहते हैं. आई डोंट थिंक ज़्यादा प्रेशर रहता है. अगर आपके पास सेम डायरेक्टर है, गाने हैं, सब कुछ है, एंड वी हैव सच अ ब्यूटीफुल स्टार कास्ट, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं है. लेकिन यस, ऑब्वियसली एक कंपैरिजन लोगों के माइंड में तो रहता ही है. सुपर हॉट हैंडसम मेल स्टार्स और सुपर सेक्सी सुपर हॉट फीमेल स्टार्स एक साथ आए, तो मेरे ख्याल से स्क्रीन पे उसको एक विलन नहीं सुपर विलन बोलना चाहिए. एज अर्जुन टोल्ड कि उनकी लाइफ में उनका जो दोस्त था वो उसको हीरो समझते थे लेकिन विलन निकला. आप तीनों से पूछना चाहूंगा, कभी ऐसा हुआ है जिसको आपने हीरो समझा वो विलन निकला, या वाइस वर्सा जिसको विलन समझा वो हीरो निकला? ऐसे हम तो I don't think so. एंटरटेनर बनाई थी, ये तो बहुत फिलोसॉफिकल क्वेश्चन. अब हम सबसे पूछ रहे हो. आपने तो बताया ही कि आपने एक बार मैं बोलना बंद कर देता हूँ. I honestly don't think so hard. Your questions are really complicated. And I'm a very simple guy.
इनके questions भी काफी complicated थे. It's like one quiz contest going on here. And I'm here for the film, and I'm here to celebrate a good film with some nice questions. And I think we've got a fantastic producer, two fantastic producers, fantastic cast, outstanding director, fantastic partners sitting here. तो अगर आप इनके बारे में कुछ पूछे, then I'll be very happy. Abhi Anil Thadani is distributing this film, so I'm very excited. Our friend Shad Randhawa is in this film. Shiv Chanana यहाँ पे, Alok, Asim, Varun, Amul. I mean, fantastic people here who made this film happen. तो इनको credit देना चाहूँगा मैं. Come on, boys. Mohit sir, on your right. Yeah, on your right, sir, right. Oh, yeah. Sir, you have cast two hunk of Bollywood. That is John sir, who is physics freak, and of course Arjun sir, who मैं आपके गले मिलना चाहता हूँ. आपने मुझे जॉन की तरह हाथ बोला दिया आज. Thank you, sir. Sir, when you were making this movie, both were like, और मूवी में आपका बताया गया कि both बैड बॉडी ऑल्सो. तो आपने जैसे इनको बाबा बोलते, जैसे आपने उनको कुछ अपने और से टिप दिया क्या कि ये रोल के लिए? देखिए, मैं फिल्में ऐसे बनाता नहीं हूँ कि मैं लोगों को सिखाऊं. और मेरा काम है, आई थिंक यू डेवलप द कैरेक्टर विद द एक्टर. Okay, and you have to play to the actor and how he's doing it. You can't convert them to become somebody else. But I must say, it's not just the men. मुझे one of the girls, I'm not mentioning who, on the spot we felt that I need to hold a hammer and enter the scene. And it was her idea, not mine at all. So I think the process of making a movie cannot be a regiment. You have to play with the actors. And most importantly, जितना बुरी चीजें करनी थी वो थोड़ा डिस्कवर कर लिया इन लोगों के बारे में. I think that was a big advantage. सबके सीक्रेट पता है अभी मुझे. Hi, We take one last question, right, ladies and gentlemen? Hi, Sharma this side from Tara and Disha. मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि ट्रेलर में तो हमने सिर्फ एक ही सीन आप दोनों का एक साथ देखा है, पर आप दोनों ने कितना स्क्रीन स्पेस एक साथ शेयर किया है फिल्म के अंदर, इसके बारे में बताइए, और कितना एंजॉय किया एक दूसरे के साथ. अरे ये तो बहुत पता है. आप जो फ्री में पूरी पिक्चर देखना चाहती हो यहाँ 29 July is when you'll get to know. हेलो. कितना एंजॉय किया. एंड जॉन सर, आपसे भी एक सवाल ये है कि सर जब हम फिल्म की बात करते हैं, जैसे आपने कहा ये आपका कमबैक है, तो बिपाशा के साथ में आपका जो बॉन्ड था या जो स्क्रीन स्पेस आपने जो शेयर किया है, वो आज तक हम याद करते हैं और बहुत ही पसंद किया है. वेल, दिशा के साथ क्या वैसा ही बॉन्ड और वैसा ही स्पेस देखने मिलेगा हमें? I think there are certain actors that I've worked with in the past जिनके साथ the chemistry was lovely, and I think with Disha it was absolutely fantastic. And you'll see it when you watch the film. क्योंकि बहुत कम लोगों के साथ ऐसे होता है कि when you get on screen, you see two people and you say, it's working, it's really working. So I think with Disha, we felt that it was really nice. I was sorry, but I was lucky I was an assistant working on the set where John used to do love stories. So when I met John, I said, I want to do a love story. I want to do a more than a heartbreak story with you. And I think we never worked on an action film. I wasn't there in Elan, but I was there in the beginning. And I think John's not done that, and he's so good at it. So I was so happy when it was like going back to where we all started, and we could play this thing. So I think I have tried to do something different with John. He's not just the action hero, he's the man with the heart, a villain with the heart. Go. One last question, ladies and gentlemen. Yeah, on your right. Yeah. On your right. मेरा सवाल मोहित सर से है. On your right, sir. आकाश है from नवभारत. सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि स्टारकास्ट से तो हम सभी ने बात की, लेकिन फिल्म का ट्रेलर जैसे हमने देखा तो रितेश के भी कुछ ग्लिम्पसेस दिखाए गए हैं. तो हम यही जानना चाहते हैं कि क्या इसके रिटर्न्स में रिटर्न्स में हम रितेश की भी कमबैक करते नजर आएंगे? अगर इसका जवाब मैं सच्चा दूं तो आई थिंक दे विल किल मी, द प्रोड्यूसर्स. उसके लिए आपको थोड़े पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, एंड यू विल हैव टू वॉच द फिल्म. But yes, there is a foundation. Yes, सिर्फ कहानी एक प्रोजेक्ट नहीं थी. There is a lot of writing that has gone into this film, and I think you should stop Asim after this.
Thank you so much, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं and would like to invite on stage some very important people जिनके बिना शायद ये नहीं हो पाता. Shiv Chandra Saab from P Series, give it up. Ms. Ruchika Kapoor from